हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वाति की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट homophones. So what is the meaning of homophones? Homophones means समान उच्चारण वाले शब्द. Their pronunciation is same but the meaning is different. So let's start. Yes, you know the number one is eight. E-I-G-H-T. Eight means art. And the second eight. A-T-E. What is the meaning of eight? Eight means khana. Yes. Number two homophone is sun. S-O-N, sun. Sun means beta. And S-U-N, sun. Sun means suraj. Yes. So now the third homophone is deer and deer. The first deer is D-E-E-R. Deer means hiran. And second D-E-A-R. What is the meaning of deer? This deer means is priya or pyara. Number four homophone is accept and accept. A-C-C-E-P-T. The meaning of this word is स्वीकार करना. And E-X-C-E-P-T. Accept means अलावा. Right? And the last is bat. Bat. B-A-T, bat. See, both the spellings are same. B-A-T, bat. B-A-T, bat. But the meanings are different. First bat is balla and the second bat is चमगादड़. So thank you so much. तो अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं so please लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है. फॉर माई मोटिवेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. मैं इसी तरीके के छोटे छोटे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूंगी. धन्यवाद.